So welcome guys. Now we will continue our video lectures from the previous sections of the Control of Narcotic Substance Act, the 1997. As we have already discussed in the previous videos, the section from section 1 to the section 19s, and we have concluded in that video lectures the two chapters of the Control of Narcotic Substance Act 1997 that include the first chapter was the preamble and the preliminary, and the second chapter was the regarding the prohibition and punishment. Now in this chapter, this is regarding the search and investigation. So in this chapter, it is quite clearly mentioned that this is regarding the searching and investigating any person or any premises or place in which the federal government or provincial government or the DG anti-narcotic force or even the special court has sufficient reason that someone is violating the provision of this act or the program. So now let's continue from the section 20. So now let's so the title of the section 20 is the power to issue warrant. So a special court may issue a warrant for the arrest of any person whom it has reason to believe to have committed an offense punishable under this act. So simple मीन ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है स्पेशल कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकता है किसी भी बिल्डिंग प्लेस और प्रेमिसेस इवन कन्वीनियंस की, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि कन्वीनियंस में डिफरेंट चीज़ें आती हैं जैसे कि एरोप्लेन, दी व्हीकल वेजल्स एंड दी एयरक्राफ्ट्स और द रेलवेज एटसेट्रा। बिकॉज ये चीज़ सारी चीज़ें जो है ये यूज़ हो रही है कि जो नारकोटिक सब्सटेंस है वो किसी एक जगह से ट्रांसफ़र की जाए दूसरी जगह पर। सुना इसका मतलब ये इस सेक्शन 20 का के स्पेशल कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकता है किसी भी बिल्डिंग प्लेस प्रेमिसेस या कन्वीनियंस की जो है उसकी सर्चिंग के हवाले से कि वहाँ पर एक ऑफिसर जाए और सर्च करे कि आया जो ये सेक्शन जिसकी डिफरेंट प्रोविजंस है क्या इसकी वायलेशन या कंट्रावेंशन तो नहीं हो रही। सो वो एक ऑर्डर जारी कर सकता है कौन, स्पेशल कोर्ट। while in the subsection 2 it is clear that the जो ऑफिसर सबसेक्शन 1 के अंडर अपॉइंट किया गया वो उसके पास जो है वो सारे पावर होंगे जो कि सेक्शन 21 के ऑफिसर के साथ होते हैं। So now let's proceed toward the section 21. Now let's move toward the section 21. That is the power of entry, search, seizure and arrest without warrant. So अगर हम subsection 1 को discuss करें, so where an officer not below the rank of sub-inspector of police or equivalent authorized in this behalf by the federal government or provincial government, knowledge, information, etc. So simple mean ये है section 21 का कि फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो एक ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है, लेकिन उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि वो एटलीस्ट सब इंस्पेक्टर पुलिस के रैंक से बिलो ना हो। तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है किस पर्पस के लिए कि वो किसी भी जगह पर जाकर जो है वहाँ पर सर्च करे, एंटर हो जाए, सीज करे या इवन अरेस्ट सम नार्कोटिक अफेंडर्स जो कि इस एक्ट की डिफरेंट प्रोविजन है इसकी कंट्रावेंशन कर रहा है। सो उस ऑफिसर के पास ये सारे पावर जो है होंगे जो कि इस सेक्शन 21 के टाइटल में दिए गए हैं, पावर ऑफ एंट्री, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट। सो दिस वाज जस्ट द overview of this subsection 1 of the section 21 कि वो किसी भी बिल्डिंग, प्लेस, प्रेमिस और इवन कन्वीनियंस को जो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है। And then now let's proceed toward the it is further in the continuation that के section 21 ऑफिसर जो है वो एंटर भी कर सकता है किसी जगह पर, इवन जो डोर्स है वो भी ब्रेक कर सकता है या कोई और ऑब्स्टिकल से उसे हटा सकता है। इवन the section 21 officer can seize the narcotics, psychotropic or the controlled substances जिसका जो उसके पास sufficient reason हो कि वो एक बंदा जो है इस एक्ट की जो डिफरेंट प्रोविजंस है इसकी वायलेशन कर रहा है, और इवन समवन डिटेन मीन छुपा रहा है किसी चीज़ को। और so this was all regarding the
power of the section 21 and this is the most important section of this act. इस एक्ट में कुछ चीज़ें हैं वो जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सेक्शन 24 में अंडर कवर एंड कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन है। इसी तरह सेक्शन 21 ऑफिसर और इसके जो है डिफरेंट पावर्स लाइक दे कैन एंटर, सर्च, सीज एंड अरेस्ट विदाउट वारंट, इवन विदाउट वारंट। जिस तरह हमने सेक्शन 20 में डिस्कस किया कि स्पेशल कोर्ट के पास ये पावर है कि वो वारंट जारी करेगा, फिर जो है वो एक ऑफिसर जाए किसी बिल्डिंग, प्रेस या प्रेमिसेस में और फिर वहाँ पर जो है फर्दर इंक्वायरी करेंगे। लेकिन सेक्शन 21 के सेक्शन 21 का जो ऑफिसर है उसके पास ये पावर है कि वो विदाउट वारंट जो है डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन, एंटर और सर्च, सीजिंग एटसेट्रा कर सकता है। While in the subsection 2 it is clear कि subsection 1 of the subsection 1 of the section 21 का जो ऑफिस है वो कोई भी इंक्वायरी अगर करे किसी बिल्डिंग को जो है सर्च करे, एंटर करे, इवन प्रेमिसेस और कन्वीनाइंस, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा वो अपने इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर को जो है फिर a copy, send a copy. They will send a copy to their immediate superior officers. Now now let's proceed toward the section 22. So the section 22 is further in the continuation of the section 21. That is power to seizure and arrest even in the public places. Simple mean ये है कि जो है वो section 21 का जो officers है वो even in the public places जो है वो भी जो है किसी को अरेस्ट और इवन किसी को जो है सीज कर सकता है। सीज मीन के प्रॉपर्टी की जो है वो उसकी एलाइनेशन मीन ट्रांसफर किसी एक जगह से दूसरी जगह दे विल बी प्रोहिबिटेड। So public place कौन से हैं? So the public place may be either the public conveyance, suppose एक बस है, hotel, shops or any other places intended for use by or accessible to the public. So any place that is accessible to the public, that will be the public place, and section 21 officer has the additional power that they can even seize and arrest any person who violates or contravene the provision of this act, वो चाहे कोई शॉप्स हो, कोई होटल हो या कोई कन्वीनियंस हो। Now further the section 23. So this section 23 is the power to stop and search convenience. इसका सिंपल मीन्स ये कि सेक्शन 19 का जो ऑफिसर होता है जो कि नारकोटिक्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की फूड फीचर के हवाले से था। बाय द वे सेक्शन 19 वाज रिगार्डिंग द फूड फीचर ऑफ द नारकोटिक अफेंडर के जो एसेट्स है उसके फूड फीचर के हवाले से था। सो सेक्शन 19 का जो ऑफिसर्स है वो किसी भी कन्वीनियंस को, वो चाहे एयरक्राफ्ट हो, एरोप्लेन हो या इवन जो है एक व्हीकल और वेजल्स हो, तो उसे स्टॉप कर सकता है और सर्च कर सकता है कि आया इस एक की जो प्रोविजन इसकी वायलेशन तो नहीं हो रही। सो दिस वाज जस्ट अ सिंपल ओवरव्यू ऑफ द सेक्शन 23. Now let's proceed toward the section 24. This is regarding the undercover and control delivery operation. This is the most important section of this act. There are different sections that is important, like the section 21 officer and their powers, then the section 24 undercover and control delivery operations, and then in the section 46 that is regarding the establishment of the special courts. जिस तरह हमने डिस्कस किया है ड्रग 1976 में कि उसमें जो है अथॉरिटी जो डिसाइड करेगी कि आया एक ऑफेंस जो है वो हुआ है या नहीं हुआ है, सो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द ड्रग कोर्ट। लेकिन द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 में ये पावर जो है ये डिसाइड कौन करेगा? सो दिस विल बी डिसाइडेड बाय द स्पेशल कोर्ट। एंड स्पेशल कोर्ट की जो है वो उसकी कंपोजिशन, उसमें कौन से लॉ एप्लीकेबल होंगे, so that is properly discussed in the separate chapter. There is in the chapter 5, and then there are two types of the special code, by the way. So now let's come toward the section 24. So section 24 का जो है main purpose ये है कि first of all the federal government of the Pakistan वो जो है अप्रूव कर सकता है एक ऑपरेशन को जो कि अंडरकवर एंड कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन होगा, और इसका मेन पर्पस ये होगा कि वो जो है मेनली जो नारकोटिक ऑफेंडर्स हैं जो भी इन्वॉल्व हैं नारकोटिक्स, साइकोट्रोपिक और दी कंट्रोल सब्सटेंसेस के ऑफेंस करने में, या वो चाहे विद इन द पाकिस्तान हो या आउटसाइड द पाकिस्तान,
जो है वो इन्वॉल्व है, तो उन बंदों को आइडेंटिफाई करना या वो जो भी ग्रुप्स हैं या जो भी है उसको आइडेंटिफाई करना, या एक कंपनी है वो ये सब कुछ कर रही है. सो द मेन पर्पस हियर इज द फेडरल गवर्नमेंट will approve an operation वो within the पाकिस्तान हो या outside the पाकिस्तान हो, इसका मेन पर्पस ये होगा कि वो इन्वेस्टिगेट करे, और ये ऑपरेशन जो होगा ये वैलिड होगा कितने टाइम्स के लिए. सो दिस विल बी वैलिड फॉर दी 3 months. एंड देन सबसेक्शन 4 इसमें ये दिया गया है कि ये सब कुछ फिर इस ऑपरेशन के अंडर अलाउड होगा, जिस तरह हमने सेक्शन 4 में डिस्कस किया है कि सेक्शन 4 या इसके डिफरेंट कंटिन्यूएशन में हमने डिस्कस किया है कि कल्टीवेशन, इसके अलावा जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, सो दे आर प्रोहिबिटेड. अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, अगर आप जो है इंडस्ट्रियल, मेडिकल और दी फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए इन चीज़ों को नहीं यूज़ कर रहे हैं, सो यू आर नॉट अलाउड. लेकिन यहाँ पर नरकोर और कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन में जो है इन सारी चीज़ों की जो है वो चाहे नारकोटिक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस हो, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनरी यूज़ हो रही हो या जो भी हो, उसकी allowing any convenience to enter or leave पाकिस्तान. सो उस ऑपरेशन के अंडर कोई भी कन्वीनांस जो है वो पाकिस्तान एंटर भी कर सकता है, इवन लीव भी कर सकता है, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इज अलाउड. इसके अलावा जो है कोई भी नारकोटिक साइकोट्रॉपिक और कंट्रोल सब्सटेंसेस ये भी जो है अलाउड है कि वो इन आउट करे पाकिस्तान में, या इवन विद इन पाकिस्तान जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाए वन प्रोविंस से या इवन वन सिटी से किसी दूसरी सिटी में ट्रांसफर हो जाए. और इसका मेन पर्पस ये होगा कि एक ऑफिसर्स होगा जो कि फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे, जिसका मेन पर्पस ये होगा कि जो नारकोटिक अफेंडर है उसको आइडेंटिफाई करें. इसके अलावा जब हमने जो कि जो ऑफिसर अथराइज किया गया हो वो फर्दर एक ट्रैकिंग डिवाइस भी रख सकता है कन्वीनाइंस पर. इसके अलावा अलाउइंग एनी पर्सन हु हैज पोजेसिंग और कस्टडी ऑफ द नारकोटिक, और इवन जो है एक बंदा है जिसके पास नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक और कंट्रोल सब्सटेंस है, तो उसको भी अलाउ कर सकता है कि वो एंटर और लीव करे पाकिस्तान को. इसके अलावा जो भी चीज़ है वो इस ऑपरेशन के अंडर होगी, सो दैट विल बी दी, इसमें जो है ये होगा कि उसमें फर्दर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना इन्वॉल्व ना हो. इसके अलावा जो विद इन द ऑपरेशन के जो जो भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है वो होंगे उसके मुताबिक होंगे. देन इन द सबसेक्शन 6 इट इज गिवन दैट दी जो भी नारकोटिक साइकोट्रॉपिक और कंट्रोल सब्सटेंसेस वो कंसिडर इस तरह करेंगे कि ये पाकिस्तान के जो है वो अगर पाकिस्तान में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहे हो, सो ये इस तरह कंसिडर की जाएगी कि ये कस्टम एक्ट 1969 के अंडर हो रही है, रिगार्डिंग टू दी कस्टम एक्ट 1967 के अकॉर्डिंग हो रही है, बिकॉज ये जो है एक अनकवर और कंट्रोल्ड ऑपरेशन है. सो दिस वाज रिगार्डिंग द सेक्शन 24. Now let's move toward the section 25. So this is regarding mode of making searches and arrest. इसका मतलब सिंपल ये है कि जो भी अरेस्ट और सर्चेज हो रही है रिगार्डिंग टू दिस एक्ट या इसके जो भी प्रोविजन है, सो वो चाहे सेक्शन 2, 21, 22 और 23 के अकॉर्डिंग जो भी अरेस्ट और सर्चेज हो रही होगी, सो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1998 के मुताबिक होगी. इसके अलावा जो है एक्सेप्ट सेक्शन 103. सो सिंपल मीन के जो भी सर्चेज और अरेस्ट होंगे सो वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के अकॉर्डिंग होंगे. The section 26 is the punishment for vicious entry, search, seizure or arrest. इसका सिंपल मीन ये है कि अगर कोई बंदा है एक ऑफिसर से वो अपनी पर्सनल इशू के बेस पर जो है कोई कन्वीनाइंस है उसे स्टॉप कर रहा है, उसे सर्च कर रहा है, और इवन एक प्रेमिसेस और बिल्डिंग को जो है वो सर्च कर रहा है, सो विदाउट सफिशिएंट रीजन और विदाउट ग्राउंड रीजन अगर एक ऑफिसर ये सारी चीज़ें करवा रहा है, सो दिस इज by the way not allowed, and this will be considered as vicious entry, search, seizure or arrest. So for that then there is some punishment, so that may be 3 years and with 25,000 rupees fine. So this was regarding the vicious entry, search, seizure and arrest. Now the section 27 is regarding the disposal of person arrested and article seized. So इसका simple mean ये है कि जो भी narcotic और psychotropic substance है, suppose और एक वेसल है, व्हीकल है,
जो भी है, एक मशीनरी है जो कि नार्कोटिक सब्सटेंस की प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही है। सो उन सारे सब्सटेंस की जो है डिस्पोजल फिर कहाँ पर होगी? सो दे विल बी डिस्पोज्ड टुवर्ड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरबाई पुलिस स्टेशन और टू द स्पेशल कोर्ट। और जो स्पेशल कोर्ट और द ऑफिसर इन चार्ज जो कि एक पुलिस स्टेशन में होता है। और ये जो है फर्दर सेक्शन 28 में हम डिस्कस करेंगे कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो कि यहाँ पर है कि सेक्शन 28 में ये है कि पावर टू इन्वेस्ट ऑफिसर ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज विद पावर ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। सो सिंपल मीन इसका ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वो चाहे पुलिस हो या कोई और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, सो उसके किसी भी ऑफिसर को जो है डीजी और द स्पेशल कोर्ट जो है उसके उसे ये एडिशनल पावर दे सकती है कि वो ऑफिसर इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का, और वो जो डिफरेंट नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के डिफरेंट एक्टिविटीज़ है वो फर्दर डील करेगा। जो कि हमने पहले डिस्कस किया कि नार्कोटिक जो भी आर्टिकल्स हो वो फिर या तो नियर बाय पुलिस स्टेशन का में जो ऑफिसर इंचार्ज होगा उसे डिस्पोज होगी या स्पेशल कोर्ट में डिस्पोज होगी। और सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 21 में ये है कि द अथॉरिटी और ऑफिसर टू होम एनी पर्सन और आर्टिकल इज फॉरवर्डेड। मतलब ये है कि सिंपल जो भी नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस जो भी आर्टिकल्स हो या इवन एक बंदा हो, सो फिर ये जो ऑफिसर इंचार्ज और स्पेशल कोर्ट फर्दर जो है उसकी डिस्पैच और इसकी डिस्पोजल के लिए फर्दर जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो फिर उसके वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? इन दोनों अथॉरिटी की फिर जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि वो इन आर्टिकल्स और जो नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है या जो बंदा है इसकी फर्दर डिस्पोजल जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर स्पेशल कोर्ट और दी ऑफिसर इन चार्ज। तो जिस तरह आपने पिछले सेक्शन 27 में डिस्कस किया है ये जो भी डिस्पोजल है जो नार्कोटिक साइकोट्रॉपिक और कंट्रोल सब्सटेंसेस के वो जो है या तो नियर बाय पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर इंचार्ज होगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या स्पेशल कोर्ट जो है फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर सेक्शन 28 में जिस तरह हमने डिस्कस किया कि फेडरल गवर्नमेंट जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिसर को जो है अपॉइंट कर सकता है एज अ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। Now, Section 29 is regarding the presumption from possession of illicit articles. So इसका सिंपल मीन ये है कि अगर कोई बंदा है और उसके पास जो है एक ऑफिसर ने जो है या एक अथॉरिटी जो कि या तो स्पेशल कोर्ट या डीजी एंटी नार्कोटिक फोर्स ने अपॉइंट किया हो, और वो उस बंदे के साथ उसने जो कुछ आर्टिकल्स या इवन कोई और एक्टिविटी वो कर रहा है और वो इस एक्ट की जो प्रोविजन है इसकी कंट्रावेंशन हो रही है। सो until that person didn't prove himself, मतलब अगर वो बंदा खुद जो है फर्दर एक्सप्लेन ना करे कि ये चीज़ें मेरी नहीं है और वो एज ए सफिशिएंट ग्राउंड रीजन पर फर्दर वो एक्सप्लेन ना करे, सो हम प्रिज्यूम ये करेंगे कि वो जो भी आर्टिकल्स होंगे वो इसी बंदे के होंगे। सो दिस वाज रिगार्डिंग द सेक्शन 29। Now let's move toward the section 30. So इसमें भी further continuation है कि presumption as to document and certain cases. सिंपल मीन ये है कि कोई भी अगर कोई सिग्नेचर्स हैं कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी है अगर वो इस एक्ट की जो प्रोविजन है उसकी कंट्रावेंशन के अगेंस्ट हो रही है, सो हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि वो जो भी बंदा उस चीज़ में इन्वॉल्व है, सो इसका मतलब ये होगा कि that they are responsible and that signature documents etc that belong to that individual person until he or she himself or herself didn't prove that. Now the power to call for information. So इसमें फर्दर जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया है कि सेक्शन 21 का जो ऑफिसर होता है उसके पास एडिशनल डिफरेंट पावर्स होते हैं। सो इवन सेक्शन 21 का ऑफिसर जो है वो पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन वो ये भी कर सकता है कि किसी को भी बुला सकता है कि फर्दर उसको एक्सप्लेन करे एक एक्टिविटीज़ की आया किस तरह ये हो रही है, इस एक्ट की जो प्रोविजन है इसकी कंट्रावेंशन तो नहीं हो रही है। सो वो किसी को भी बुलाकर उससे जो है फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है वो निकाल सकता है। सो दिस इज आल्सो द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सेक्शन 21 ऑफिसर और इवन दे कैन रिक्वायर एनी पर्सन टू प्रोड्यूस इन डॉक्यूमेंट फर्दर मीन एक पर्सन को वो बता सकता है कि आप जो है इस डॉक्यूमेंट्स की फर्दर मुझे एक्सप्लेनेशन दें कि ये किस तरह है क्यों है एक्सेट्रा इवन एग्जामिन एनी पर्सन्स
So this और इवन इन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसकी भी जो है जान पड़ताल वो कौन कर सकता है सेक्शन 21 का ऑफिसर्स. Now section 32 is regarding the articles connected with narcotics. So simple mean इस section का ये है कि subsection 1 of the section 32 says that whenever an offense has been committed which is punishable under this act, the narcotics, psychotropic, this material, apparatus, utensil, etc. mean that where such offense has been committed should be able to confiscation. So simple mean ये है कि जो भी narcotic or psychotropic substance or even material or apparatus or utensils जो कि narcotic और psychotropic substance की जो provision है इसकी violation में use हुई हो, so वो substances वो confiscate होंगी और confiscation के लिए further फिर another section में जो है further explanation है कि किस तरह confiscation होगी. So first of all, we will discuss that in the individually in their sections. By the way, before the confiscation, the special courts or even the section 21 officer or the officer authorized by the DG anti-narcotic forces. First of all, ये लोग जो है किसी भी narcotic offender की जो property या जो assets होते हैं, first of all they seize them and then they confiscate and at the last they forfeit the property or asset of that narcotic offender to the federal government. So these are the step-by-step procedure, by the way. So this was regarding the subsection 1 and the section 32. Now in the subsection 2, it says that it is also in the continuation that जो भी narcotic substance की जो packages हो, vehicles हो, vessels हो, वो अगर इस एक्ट की जो provision है इसकी violation में use हुई हो, so they will be confiscated to the, so they will be confiscated. Provided that no vehicle, vessel or other convenience shall be liable to confiscation. इसके सिंपल मीन ये है दैट कि वो जो बंदा इन्वॉल्व हो उस चीज़ों में या जिस बंदे से ये नारकोटिक साइकोट्रोपिक या कंट्रोल सब्सटेंसेस और इवन एपरेटस यूटेंसिल एक्सेट्रा ऑब्टेन की गई हो, सो उससे पर फिर जो है हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, कि आप फर्दर एक्सप्लेन करें कि ये चीज़ें आपकी है, ये आपकी नहीं है. लेकिन इन द प्रीवियस सेक्शन वी ऑलरेडी स्टडीड दैट अगर किसी बंदे के साथ जो है नारकोटिक साइकोट्रोपिक या जो भी सब्सटेंस हो, तो हम एट द फर्स्ट प्रिज्यूम ये करेंगे कि ये उसी बंदे के ही है, लेकिन हम अपॉर्चुनिटी देते हैं उसे, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, वो चाहे वो सब्सटेंस हो या आर्टिकल्स हो, या जिस तरह एक अलग सेशन में हमने डिस्कस किया कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हो, सिग्नेचर हो, राइटिंग हो, वो भी हम फर्स्ट एट द फर्स्ट प्रिज्यूम करते हैं कि ये इस बंदे के, लेकिन हम एट द एंड उसे एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप फर्दर एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या ये चीज़ें आपकी है या आपकी नहीं है. लेकिन हम अगर ग्राउंड रीजन में देखें तो so these by the way in the first attempt they will say that these all things didn't belong to me, so on the separation on the ground reason हम जो है फिर इस नतीजे पर पहुंचेंगे या ये चीज़ें इस बंदे के है या नहीं है. So this one regarding the section 32, that is regarding the confiscation. Now let's proceed toward the section 33, that is procedure for making confiscation. So this is regarding the procedure for the confiscation. So the subsection 1 says that at the first, the special court will decide that either the freezed or the seized property or asset of any individual would be confiscated or not. So at the first, this will be decided by the special court. And the subsection 2 says that if the property, the owners of the individual, if the owners of the of these assets are not is not known, so फिर जो है ये further inquiry या decide कौन करेगा फिर, again they will decided by the special courts. Then in the provided that इसमें ये दिया गया है कि अगर at least अगर आप किसी की प्रॉपर्टी स्पेशल कोर्ट अगर ऑर्डर देता है किसी भी प्रॉपर्टी की उसकी कन्फिस्केशन के हवाले से, तो एटलीस्ट वो प्रॉपर्टी पहले से 1 मंथ हो चुका होगा उसे फ्रीज और सीज करते हुए. सो देन और इसके अलावा जो है अगर वो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग भी देनी चाहिए. सो सिंपल मीन ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है किसी भी बंदे के और वो 1 मंथ से सीज और फ्रीज है, तो फिर स्पेशल कोर्ट जो है उसके पास ये पावर है कि वो
उस प्रॉपर्टी की कन्फिस्केशन के हवाले से ऑर्डर दे सकता है। देन इन द अनदर प्रोवाइडेड दैट में दिया गया है कि अगर सपोज एक ऐसी नारकोटिक साइकोट्रॉपिक और कंट्रोल सब्सटेंस है जो कि अगर 1 मंथ लेता है तो फिर वो डिके होती है। सो उस केस में जो है फिर स्पेशल कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है कि वो प्रॉपर्टी या जो भी सब्सटेंस हो उसे सेल की जाए। एंड देन इन द सबसेक्शन 3 इट इज आल्सो क्लियर दैट अगर कोई बंदा है वो इस एक्ट की वायलेशन उसने नहीं की है लेकिन वो क्लेम कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और वो इस सारी चीज़ों के लिए यूज़ नहीं हुई है, सो देन विद इन 30 days दे कैन अपील टू दी स्पेशल कोर्ट्स। इसके अलावा जो है फर्दर ये इट इज आल्सो एक्सप्लेन हियर दैट द टाइम लिमिट ऑफ 30 days can be extended to the further if the person that claim that these property or asset belongs to me, so they can even appeal to the special courts beyond the 30 days, but that will be decided by the special court again. And then in the subsection 4 of the section 33, it is clear that the narcotics, psychotropic, or controlled substances, they will be disposed according to the section 516A of the Code of Criminal Procedure 1898. मीन जो भी सब्सटेंस होगी उसकी डिस्पोजल जिस तरह हमने in the earlier section we have already discussed that the officers जो कि section 21 का जो officers होता है they will report all these property to the officer in charge of the police station or the special court. And then the special court will act according to the section 516 or 516A of the Code of Criminal Procedure. Then the special court will dispose that articles are the conveyance, etc. Then the section 34 is regarding the federal narcotic testing laboratory. So I will give a brief overview of these sections. So in this section, it is quite clear that okay, first of all, federal government or federal narcotic testing laboratory या तो they will build initially the federal narcotic testing laboratory for what? To test the narcotic samples to investigate that either the narcotic or psychotropic substances are present in this sample or not, or what are the proportion of these substances. So for that, the federal government will make the initially they will make either the federal narcotic testing lab or any other institution जिसमें जो already एक lab हो, so the federal government can also by notification they can also declare that lab of the institution as the federal narcotic testing lab. While in the subsection 2 it is clear in the same manner provincial government जो है वो भी एक लैब या तो बना सकती है या किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो लैब हो उसे डिक्लेयर कर सकता है कि ये provincial government की लैब्स है for the testing of what? Narcotic, psychotropic, and controlled substances. Now in the section 55 it is clear that the government analyst सपोज आपने जो है डिफरेंट लैब्स बनाए नारकोटिक सब्सटेंस की टेस्टिंग के लिए, सो वहाँ पर एक बंदा भी होना चाहिए कि वो इन सारे जो भी डिफरेंट सब्सटेंस है नारकोटिक साइकोट्रोपिक और सब्सटेंस हैं उसे फिर टेस्ट करे और उसके पास एक्सेप्शन क्वालिफिकेशन और नॉलेज भी होनी चाहिए कि that how he or she can test all these samples. So the federal government or the provincial government can appoint the federal or provincial government in the list, and the main purpose of the government in the list or the work of the government in the list will be to analyze the sample for the narcotic or psychotropic substances. And then when they will submit the report in quadruplicate, simply mean in 4 different forms, they will submit all these report to the respective authorities. So this was regarding the chapter 3. Now the chapter 4 is regarding the freezing and forfeiture of assets. So we will discuss this in the coming video. To that, stay motivated and thank you for your time.